Okay, so welcome back. So we talk about bandwidth performance of a quarter wave transformer, which comes under the category of single section quarter wave transformer. Now, maybe the bandwidth provided by a single section quarter wave transformer is not enough for our application. For example, in our example that we solved, uh, the bandwidth was 29%. So maybe this much bandwidth is not acceptable for us. Maybe we require a bandwidth of 50%, 60%, or 70%. 70%. So, is it possible that we can improve or enhance the bandwidth, matching bandwidth of our quarter wave transformer? Yes, it is possible, and we are going to talk about the theoretical background of that particular concept, that how we can improve the bandwidth. So let me write down the limitations. So what is the problem with the single section quarter transformer? So limitation. Some applications require more bandwidth than a single quarter wave transformer can provide. For such applications, we can use multi-section quarter wave transformers. So before I talk about multi-section quarter wave transformer, we need to go through the required theory, which is known as theory of small reflections. So for better understanding, we need to go through, or we can say we need to review theory of small reflections. Now we have already used some concept of this theory, but today we are going to go into the depth of that theory. Okay, so let me first use this theory to single section transformer, and then we will extend the result to multi-section transformer. So let's apply theory of small reflection to single section transformer. From microwave engineering perspective, of course, whenever if I just use transformer, it means I'm talking about quarter wave transformer.
So let's consider this simple circuit, which we call as single section transformer. So let me represent the main transmission line characteristic impedance by Z1 and the quarter wave impedance by Z2 to be consistent with the notation used in the textbook. Otherwise, you can call it Z0, Z1, you can call it Z3, Z4. It is not going to affect the final result. Okay. So this is our single section quarter wave transformer with electrical length theta, and this electrical length is related to the physical length L through this equation, theta is equal to beta. Let me define some parameters for this circuit. First parameter that I want to define is the reflection coefficient, the total reflection coefficient. Let me call it total reflection coefficient, represented by gamma. So whatever is the total reflection taking place from this end, we are calling it gamma. But we can break it down into number of reflection coefficients. So one reflection coefficient that I want to define is in this direction. I will call it gamma 1. And in this direction, I will define another reflection coefficient. I will call it gamma 2. And the reflection from this discontinuity, I will call it gamma 3. We will also define some transmission coefficients. So transmission coefficient in this direction, I will call it capital T. Let me call it 2, 1. And transmission coefficient in this direction, I will call it T1, 2. So what are these parameters representing? So this gamma. So what is gamma? This gamma is the total reflection coefficient. Total reflection coefficient. Whereas the other reflection coefficient that I have used, gamma 1, gamma 2, gamma 3, you can call them partial reflection coefficients. Partial reflection coefficients. Similarly, T12 and T21, you can call them partial transmission coefficients. Now, as I was talking about that, we have already used this type of circuit before, but let me refresh your memory that in this particular circuit, what we are doing is we are assuming that when we connect a source to the left side of this circuit, so a signal will be generated and that signal will travel towards the right. It will travel towards the right direction, or it will travel towards the load. But what will happen to that signal in real time is captured by this circuit. So let me go through what will happen to the signal that is coming. So let's assume that there is a signal, and right now
This signal is traveling and it hasn't reached the load. Okay, you can assume that as if uh, we are traveling along with this signal. Okay, so let's assume that we are traveling with this signal. So as soon as this signal arrive at this point, so this is the point of discontinuity, because the transmission line on which this signal was traveling, its characteristic impedance is Z1, and on the other side of this discontinuity, the characteristic impedance is Z2. So Z2 is different than Z1. As a result, this signal will find some discontinuity. As a result, some portion of that signal will be reflected. So I have represented that part of the reflection as gamma 1. So what is gamma 1? Gamma 1 is the reflection from this continuity at the first time. Okay. The remaining signal will be transmitted. And how much portion of that signal will be transmitted? It will be represented by this T21. T21. So now there is a signal and it is traveling on this line. Okay. When this signal reaches this end where load is connected, so what is going to happen? Again, there is a discontinuity because this is ZL and this is Z2. ZL is not equal to Z2. So this is again a discontinuity. So some signal, some portion of this signal will be absorbed by the load. So we are not right now, we are not interested in that portion which is absorbed by the load. We are interested how much part of this signal is reflected. So how much will be the reflection? That is represented by gamma 3. So depending upon gamma 3, and of course gamma 3 will be equal to ZL minus Z2 divided by ZL plus Z2. So depending upon how much ZL is different than Z2, gamma 3 will be less or more. Okay, but there will be reflection if ZL is not equal to Z2. So now this signal will be traveling in this direction. So this signal, which is now traveling along this transmission line, which is basically our quarter wave transformer, when it arrives at this point again, so again there is a discontinuity. Some part of this will travel in this direction. How much will travel in this direction? It will depend on T12. So this signal, which is traveling towards left direction, that is reflection. Okay, so this signal, some portion of it will be reflected and some portion will be again traveling in this direction, and how much will be reflected, that will depend on gamma 2. So ultimately what will happen to the signal which is coming from the generator or source side? It will continuously reflect and transmit, reflect and transmit. This process will take place as uh, till this signal amplitude becomes equal to 0. Otherwise this phenomena will take place for infinite time. So now what we are going to do is we are going to find out what is the total reflection coefficient. How much portion, how much signal is reflected in this direction. So total reflection coefficient gamma is represented like this. So we have gamma 1 plus, this is something which we have covered already, so that's why I'm not going into the too much detail. But if you refer to my previous lecture, maybe third or fourth lecture, you will find out the complete discussion how I'm writing these terms. Okay, and e raised to power minus j to theta. Similarly, then we have another component t1 to t21 gamma 3 square gamma 2 e raised to power minus j4 theta. And as I mentioned, this we will have infinite terms. So there will be number of reflections coming. So this is how you can represent it. We can simplify this result, or we can write it in a compact form. So of course, right now I have only written down first term, second term, third term.
but there will be fourth term, fifth term, sixth term, up to infinity. But all of the terms can be included in the summation operator. So let me write it down. T12, T21, gamma 3, e raised to power minus j 2 theta, and then summation operator starting from n equal to 0 up to infinity, gamma 2 raised to power n, gamma 3 raised to power n, and e raised to power minus j 2 n theta. So by putting uh, n equal to 0 in this summation operator, we will get this term. Second, by putting n नहीं equal सर, to 1, we will get this third. Yes. सर ये वाला एक्सप्रेशन समझा दे सर, इसकी समझ नहीं आ रही है सर। आपने वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन वाली थ्योरी में आपने असाइनमेंट दिया था सर। हाँ, आपने कहा था कि खुद देंगे सर इस एक्सप्रेशन में तो मसला आपने उस वक्त तो क्वेश्चन पूछा नहीं है जब मैंने कहा था कि कोई आपको क्लियर ना हो तो आप सर सबने मैंने कहा गूगल क्लासरूम में पूछा था सर। ओके। इसमें किस चीज चले टू बी मोर स्पेसिफिक, किस जगह पे आप कंफ्यूज हैं तो वो मुझे बता दें तो फिर मैं इसको क्लियर कर सर लेता ये हूँ। एक्सप्रेशन कहाँ से आया है सर? ये R1 प्लस T1 2 प्लस T मल्टीप्लाई बाई T21। ये रिफ्लेक्शन है, जिस तरह मैंने कहा कि ये जो सिग्नल है जब यहाँ से ये पास होगा तो इसका मैग्नीट्यूड T21 हो जाएगा। जब ये सिग्नल जिसका मैग्नीट्यूड T21 है जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, कितना रिफ्लेक्ट होगा, वो गैमा 3 ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो T21 गैमा 3 सिग्नल है। ये जो सिग्नल मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है ये वाला, इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, T21 गैमा 3। ओके, जब ये सिग्नल यहाँ से पास हो जाएगा तो इसके साथ क्या चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी, T12 भी आ जाएगा। तो अब तक क्या था, T21 गैमा 3 था, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो गया, T12 हो गया। तो अगर आप ये देखें क्या लिखा हुआ है, T12 T21 गैमा 3, और ये टर्म इसके साथ किस लिए आ गई है, क्योंकि ये सिग्नल पहले इस डायरेक्शन में इसने ट्रेवल किया तो इसका फेस थीटा चेंज हो गया। ये सिग्नल जब वापस यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करेगा फिर ये थीटा ट्रेवल करेगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 थीटा आ गया। ठीक हो गया। सर ठीक है सर, और थैंक यू ये सर। सिग्नल, ये जो अभी आपने ये लिखा हुआ है, ये T21 गैमा 3 के साथ ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो गया था और ये सिग्नल इस डायरेक्शन में चला गया था। तो ये किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट, अगर सिग्नल इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो ये कौन सी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस सिग्नल के साथ क्या हुआ है, अगर ये रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हुई है तभी तो मैंने इसको रिफ्लेक्शन में ऐड किया हुआ है ना, कि टोटल रिफ्लेक्शन में फर्स्ट टाइम गैमा 1 कंपोनेंट आ गया, ये जो मैंने लिखा हुआ था फर्स्ट टाइम गैमा 1 आ गया, फिर सेकंड टाइम ये आ गया, अब थर्ड टाइम क्या आएगा, थर्ड टाइम के लिए अगर आप देखें T21 गैमा 3 ये सिग्नल है, ठीक है। जब ये सिग्नल यहाँ आएगा तो ये दोबारा रिफ्लेक्ट होगा, जब ये दोबारा रिफ्लेक्ट होगा तो इसका रिफ्लेक्शन कितना होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, गैमा 2 पे डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट टाइम अभी मैं यहाँ पे इसको लिख भी लेता हूँ कि अभी जब दोबारा जब सिग्नल इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होगा उसको मैं मैथमेटिकली किस तरह रिप्रेजेंट करूंगा, मैं इसके साथ लिख रहा हूँ ताकि आप इसको कवर कर लें कि क्या सिग्नल आपके पास आ गया, इसका मैग्नीट्यूड होगा T21 था, इसके साथ गैमा 3 भी था, जब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया तो इसके साथ गैमा 2 भी मल्टीप्लाई हो गया। ठीक हो गया। अब ये सिग्नल जो है ट्रेवल कर रहा है टूवर्ड्स लोड, ठीक हो गया। जब ये लोड तक पहुंचेगा तो दोबारा ये रिफ्लेक्ट होगा और इसके साथ ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ऑलरेडी गैमा 3 इसके साथ है, इसका मतलब है कि मैं इसके साथ क्या लिखूंगा, स्क्वायर हो जाएगा। और अब ये किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। जब ये यहां पहुंचेगा तो इसके साथ क्या चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी, T12 सर। क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, T12 मल्टीप्लाई हो जाएगा, T12। T12। तो अगर आप देखें ये एक्सप्रेशन को देखें, ये जो मैं लिखी हुई है ये देखें, T12 है, T21 है,
गैमा थ्री स्क्वायर है और क्या चीज है, गैमा टू है, ऐसी है ना। और उसके साथ क्या आ गया है, ई पावर माइनस जे फॉर थीटा आ गया, क्योंकि इसमें देखें थीटा 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 थीटा, तो फॉर थीटा। और इस प्रोसेस को आप कंटिन्यू करें, अगर मैं बाकी टर्म्स भी आएंगी ऑफ कोर्स, इस जनरल एक्सप्रेशन से आपको क्लियर हो गया कि T12 और T21 ये कांस्टेंट फैक्टर्स हैं, अगर आप देखें ये हर टर्म के साथ, ठीक है। इस तरीके से गैमा थ्री और गैमा टू किस तरह है, वो पावर पे डिपेंड करता है कि फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है। तो ये देखें थर्ड टर्म में गैमा थ्री स्क्वायर हो गया है और गैमा टू आ गया। फोर्थ टर्म में क्या हो जाएगा, गैमा थ्री क्यूब हो जाएगा और गैमा टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ क्या आ जाएगा जी, फोर्थ टर्म में थीटा। एक्सपोनेंशियल सिक्स थीटा हो जाएगा। ठीक हो गया, क्लियर है कि कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो सर, क्लियर हो गया। क्लियर है, यस सर। यस सर। ओके थैंक यू। नाउ ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग सम मैथमेटिकल रिजल्ट्स ऑन दिस फंक्शन, ठीक। और वो रिजल्ट ये है कि वी हैव अ वेल नोन रिजल्ट कि अगर हमने एक x रेज़ टू पावर n को सम करना हो फ्रॉम n इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी, और ये जो x है, अज्यूमिंग कि जो x का मैग्नीट्यूड है वो लेस देन वन, ठीक है। तो इस समेशन से मेरे पास जो रिजल्ट आएगा, आई कैन राइट इट डाउन इन अ सिंपल form, that is 1 divided by 1 minus x. This result can be applied on this. So what we can say is कि ये जो हमारे पास यहाँ पे भी हम n इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी सम कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको ये जो फैक्टर है गैमा टू गैमा थ्री ई पावर माइनस जे थ्री, इसका रिजल्ट ऑफ कोर्स लेस देन वन ही होगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट है। तो वी नो कि रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट वन से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि ये रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा कि टोटल रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, गैमा वन प्लस टी वन टू टी टू वन गैमा थ्री सो ये हमारे पास टर्म है, इसको इस तरीके से लिख लिया। इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, वन डिवाइडेड बाय वन माइनस गैमा टू गैमा थ्री ई पावर माइनस जे टू थीटा। So what I have done is कि जो समेशन एक्सप्रेशन थी इसको मैंने इस फैक्टर से रिप्लेस कर दिया यूजिंग दिस रिजल्ट। सो इस एक्सप्रेशन को हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली t1 टू t21 e raised to power, सॉरी गैमा थ्री भी है, ये जो हमारे पास रिजल्ट है इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं by making use of some important relationship। ये जो जितने भी मैंने पैरामीटर डिफाइन किए थे यहाँ पे, गैमा वन गैमा टू गैमा थ्री टी वन टू टी टू वन, इनका आपस में रिलेशनशिप बड़ा इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और वो ये है कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक तो ये है कि गैमा टू और गैमा वन में रिलेशनशिप ये है कि गैमा टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ गैमा वन। अगर आप इस सर्किट को देखें,
ये आपके पास गैमा वन है, ठीक है, जिसको मैंने गैमा वन, और ये आपके पास गैमा टू। जब आप गैमा वन कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ इम्पिडेंस, या इसको मैं मार्क कर लेता हूँ कि हमारे पास ये Z1 है और ये Z2 है, तो गैमा वन किसके बराबर होगा जी? गैमा वन इन टर्म्स ऑफ Z1 एंड Z2। Z2 minus Z1 Z2 minus Z1 divided by Z2 plus Z1. डिवाइडेड बाय Z2 प्लस Z1। और गैमा टू किसके बराबर होगा? Minus gamma 1. नहीं, इन टर्म्स ऑफ, ये तो आप मुझे डायरेक्ट रिलेशनशिप बता रहे हैं, ये अगर आपको फाइंड करना हो गैमा टू इन टर्म्स ऑफ Z1 एंड Z2, तो क्या लिखी, क्या रिजल्ट होगा? Z1 minus Z2 यस, Z1 माइनस Z2 Z1 divided by प्लस Z2। तो इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप हो गया जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है? gamma 2 is equal to minus gamma 1. माइनस गैमा, ओके, ठीक है। एक रिलेशनशिप ये भी आप आइडेंटिफाई कर सकते। दूसरा, जो हमारे पास ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है T21, इसका रिलेशनशिप है गैमा वन के साथ, और वो ये है कि T21 इज इक्वल टू 1 प्लस गैमा वन। और दूसरा रिलेशनशिप हमारे पास है कि जो T12 है ये आपके पास बराबर है 1 माइनस गैमा वन। ये भी आप इसी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप, अगर आपको कहा जाए कि ये T21 है, ये T21 है इस डायरेक्शन, इसके सामने इम्पिडेंस Z2 है, इसके पीछे इम्पिडेंस Z1 है, तो T21 किसके बराबर? तो T21 की जो इन टर्म्स ऑफ इम्पिडेंस एक्सप्रेशन को अगर आप देखें, उसमें अगर आप 1 प्लस गैमा वन डाल दें तो आपके पास दोनों इक्वल ही आएंगे। सो 1 प्लस गैमा वन एंड विल बी इक्वल टू T21 एंड 1 माइनस गैमा वन विल बी इक्वल टू T12। तो ये रिलेशनशिप हमें हेल्प आउट कर सकती हैं इस एक्सप्रेशन में। तो आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। एक तो आपने क्या करना है कि यहाँ इस एक्सप्रेशन में जो T12 है उसकी जगह आप क्या यूज करेंगे, 1 माइनस गैमा वन लिख लेंगे। इस एक्सप्रेशन में जो T21 है इसकी जगह आप क्या लिख लेंगे, 1 प्लस गैमा वन लिख लेंगे। ठीक हो गया। सो अगर आप इस एक्सप्रेशन की न्यूमरेटर को देखें, तो हमारे पास एक तो यहाँ पे ऑलरेडी गैमा वन है, इसकी जगह भी गैमा वन आ जाएगा, इसकी जगह भी गैमा वन आ जाएगा, और गैमा, इसका मतलब है कि इस टोटल रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट में जो न्यूमरेटर में हमारे पास सिर्फ गैमा वन है और गैमा थ्री। डिनोमिनेटर में आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर में गैमा टू तो अपनी जगह पे रह जाएगा, सॉरी गैमा थ्री, गैमा टू की जगह आप क्या लिख देंगे, गैमा टू की जगह आप लिख देंगे माइनस गैमा वन। सो सिंप्लीफिकेशन में आपके पास जो रिजल्ट होगा, राइट साइड पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ गैमा वन और गैमा थ्री आ जाएगा। ठीक है। और इसको फिर ऑफ कोर्स इसका आपने यहाँ पे तो दिस प्लस दिस है तो ये फ्रैक्शन है, तो इसका आप एलसीएम ले लेंगे। सो 1 माइनस गैमा वन गैमा थ्री, तो ये जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे आपके पास रिजल्ट ये आएगा, गैमा will be equal to gamma 1 plus gamma 3 e raised to power minus j2 theta divided by 1 plus gamma 1 gamma 3 e raised to power minus j2 theta। सो टोटल रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को हम सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो पॉइंट ये है कि जो टोटल रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है, इट डिपेंड्स ऑन गैमा वन गैमा थ्री। बाकी जितने भी हमने पैरामीटर्स डिफाइन किए थे इस सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस के दौरान में, उनको हमने एक्सप्रेशन से एक्सक्लूड कर दिया है, और हमारे पास टोटल रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ गैमा वन और गैमा थ्री एक्सप्रेस हो गए। अगर आप सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें
कि गैमा वन कौन सा है, गैमा थ्री कौन सा है। तो यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ कि जो हमने डिफाइन किया था उसके हिसाब से यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है उसको हमने गैमा वन का नाम दिया हुआ था, और ये जो दूसरा एंड है यहाँ से जो रिफ्लेक्शन और कोफिशिएंट हो रहा था उसको हमने गैमा थ्री का नाम दिया था। तो हमारा जो सिंगल सेक्शन क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर है, ये इसका इनपुट एंड है, ये इसका आउटपुट एंड है। इनपुट एंड पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसको गैमा वन हम कह रहे हैं, और आउटपुट एंड पे जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हो रहा है वो गैमा थ्री हो रहा है। Now, gamma 1, whether it will be small or whether it will be large, it depends कि Z2 Z1 से कितना different है। Gamma 3 की वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी वो डिपेंड करेगा कि ZL Z2 से कितना डिफरेंट है। ZL Z2 से जितना ज्यादा डिफरेंट होगा gamma 3 की वैल्यू इतना ज्यादा होगी, और ZL की वैल्यू Z2 के जितना करीब होगी gamma 3 की वैल्यू कम होगी, एंड सेम इज द केस विद gamma 1। अब यहाँ पे हम एक जिसको हमने थ्योरी ऑफ स्मॉल रिफ्लेक्शन का नाम दिया था उसकी मैं एक स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ। वो ये है कि इफ द डिसकंटिन्यूटी discontinuities between the impedances Z1, Z2 and Z2, ZL are small, then what will happen? Then multiplication of gamma 1 and multiplication of gamma 3, इसकी जो absolute value होगी it be very very small as compared to 1. सो अगर आप देखें ये भी जो मैं स्टेटमेंट दे रहा था कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि Z1 और Z2 को देख रहे हैं और Z2 और ZL को दे रहे हैं। Z1 और Z2 का ताल्लुक गैमा 1 के साथ है, और Z2 और ZL का ताल्लुक किस चीज़ के साथ है, गैमा 3 के साथ। इस फिगर के हिसाब से भी आप चेक कर लें, ठीक है। ये गैमा 1 है, इसका ताल्लुक Z2 और Z1 के साथ है, और गैमा 3 का ताल्लुक ZL और Z2 के साथ है। तो ये जो स्टेटमेंट हम दी है कि अगर इनमें डिफरेंस कम, discontinuity between the impedances is small, तो discontinuity small का मतलब यही है कि Z2 और Z1 में जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, ZL और Z2 में डिफरेंस कम है, तो गैमा 1 भी बहुत स्मॉल होगा, गैमा 3 भी बहुत स्मॉल होगा, और इनका प्रोडक्ट और भी स्मॉल हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू 1। तो ये डिनोमिनेटर में जो हमारे पास ये टोटल रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को अगर आप देखें, इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास गैमा 1 मल्टीप्लाई बाय गैमा 3 e पावर माइनस jt प्लस 1 है। तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस दिस स्मॉल टर्म का मतलब है कि we can neglect this small term. It means ke we are just left with 1. So divided by 1 means nothing. So it means कि हम total reflection coefficient को approximate कर सकते हैं, simply equal to gamma 1 plus gamma 3 e power minus j2. Now ये जो expression हमने derive की है, not only you should be able to derive the expression, इसका interpretation भी बड़ा आसान है। अगर आप देखें ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आई है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो सिंगल सेक्शन क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर से जो टोटल रिफ्लेक्शन हो रही है, जिसको हमने गैमा से रिप्रेजेंट किया हुआ है, उसमें जो मेन रोल प्ले कर रहा है वो प्ले कर रहा है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी और फिर सेकंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। लेकिन साथ में हम ये देख रहे हैं कि सेकंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के साथ तो सिर्फ गैमा 1 लिखा हुआ है,
जो सेकेंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, वहां से जो रिफ्लेक्शन हो रही है उसमें साथ में ये फैक्टर भी ऐड हो गया, और इसलिए ऐड हो गया है क्योंकि हमारा जो सेकेंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, यहाँ से जब रिफ्लेक्शन होगी वो तभी होगी कि पहले सिग्नल थीटा डिस्टेंस कवर करेगा, फिर थीटा डिस्टेंस इस डायरेक्शन में कवर करेगा, फिर जाके यहाँ पे इसका इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे जो टोटल रिफ्लेक्शन है उसमें गेमा वन तो डायरेक्टली ऐड हो गया, गेमा थ्री के साथ हमने ये फेज डिले शामिल करना है, तो ये आप इसको फेज डिले कह सकते हैं, ये इफेक्ट। ठीक। अब ये जो हमने मेन यूज किया है यहाँ पे, ये जो हमारी फाइनल रिजल्ट है, इट इज डिपेंडेंट ऑन दिस स्टेटमेंट कि डिसकंटिन्यूटी है जो है वो स्मॉल होनी चाहिए। ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस आइडिया वी विल जनरलाइज कि अब हमारे पास सिंगल सेक्शन ट्रांसफार्मर के बजाय हमारे पास अगर मल्टी सेक्शन क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर, इसका मतलब है कि लोड और जो हमारी मेन ट्रांसमिशन लाइन है जिसको हमने इस केस में Z1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इन दोनों के दरमियान अगर एक से ज्यादा हम क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर लगा दें, इस केस में टोटल रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट किसके बराबर होगा, अगर हम ये अजम्पशन यूज करें कि इम्पिडेंसेस के दरमियान जो डिसकंटिन्यूटी है वो क्या है, स्मॉल। ठीक है। सो लेट मी डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट सेशन।